The Delhi court has reserved its order in the legal battle for mega Qutub Wapsi war. Petitioners demand right to worship at Qutub Minar complex, saying it was originally a temple. Petitioners said if there was once a temple, right of worship should be granted. Court, while hearing the case, questioned petitioner on how can one change a monument to a place of worship. The Archaeological Survey of India opposed a petition that sought the restoration of 27 temples that were allegedly destroyed to construct Qutub Minar complex. ASI refuted the petitioner's claim and said that there is no evidence to clarify if the iron pillar and remains of the temples are in their original spot or bought from outside. ASI has also very much asserted that the character of the monument was frozen at the time it was put under ASI authority and that the area is not a place of worship. Meanwhile, amidst this entire controversy, offering namaz has been banned at the Qutub Minar complex. Delhi court is now going to be hearing the matter on 9th of June. You argued today that the character of a monument is frozen at a certain point. What was this argument exactly? Yes, when the monument comes under the protection of the ASI, from that date and 60 days thereafter, there is a period for raising objections. If objections are not received, then that character is frozen on that day. And when was Qutub Minar taken over by ASI, sir? It came under 1904 Act, followed by 1914 and 1958 later on. So since 1904, you're saying that the character of the Qutub Minar complex has been frozen, yes. सीधा ही कह दिया हमसे तो आप यहाँ नमाज मत पढ़िए, कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही कह दिया कि नमाज मत पढ़िए यहाँ पे। हमने कहा क्यों? कि ऊपर से ऑर्डर आया नमाज मत पढ़िए यहाँ पे। अचानक ही एकदम, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से प्यार से मोहब्बत से सब लोगों से अच्छी तरह रहते हैं हम, कोई परेशानी नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बस ये कह दिया उन्होंने। आप कितने सालों से वहाँ नमाज हो रही है? 40 साल हो गए मुझे। आपको 40 साल हो गए और आपका अपॉइंटमेंट दिल्ली वक्फ बोर्ड में? दिल्ली वक्फ बोर्ड से है। अच्छा, और अभी कब से मना किया है सर आपको ये? 13 मई जुमे के दिन। जुमे के दिन आपको मना कर दिया, तो उसके बाद नमाज नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। ASI ने उन्हें कभी कोई परमिशन नहीं दी कि आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, तो जब उन्होंने परमिशन ही नहीं दी तो फिर वो नमाज अदा नहीं कर सकते वहाँ। लेकिन ये जरूर है कि वर्षों से वहाँ पूजा हो रही थी, उस पर रोक लगा दी गई पिछली सरकार में, और जो ASI विभाग के लोग हैं, मेरी भी उनसे बात हुई है और उन्होंने उस बातचीत में ये कहा कि यहाँ पर नमाज नहीं होती, इस तरह की हमने कोई परमिशन नहीं दी है। देखिए, ऐसी कई सारी मस्जिदें हैं जहाँ ASI के अंडर आती हैं और उनमें बाकायदा नमाज हो रही है। कई ऐसी मस्जिदें हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये एक पहली मस्जिद है। लेकिन अगर अब पहले से मस्जिद है और दिल्ली वक्फ बोर्ड के वहाँ इमाम है, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिद रही होगी, और जब भी तो हम अपने इमाम दे सकते हैं। जब 46 साल से एक ही इमाम है और हमारे पास तो सारे रिकॉर्ड हैं उनके, हम उनको सैलरी दे रहे हैं, हम उनका रजिस्ट्रेशन है, उनका हर महीने उनके अकाउंट में जाता है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं और ये भी मानेंगे इनके पास सारे खतो किताबत हुआ। इन्होंने किसी भी एक बार भी ये नहीं कहा कि यहाँ नमाज नहीं होती या नहीं हो सकती। ये तो अब कह रहे हैं, और अब किसके प्रेशर में कह रहे हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल इशू है जो इस वक्त बीजेपी सारी चीजों को खत्म करके उलझाना चाहती है इन मस्जिद में और मंदिर के मसले में। The character of the Qutub Minar complex was frozen in 1904 when the ASI had taken it over, and therefore there cannot be at this stage any change in the character of this entire complex. And according to the ASI, this entire complex was not a place of worship by any religious denomination, whether it was Hindu or Muslim. No place of worship existed at that point. Another interesting argument taken by the ASI is that yes, there are remains of idols, there are remains of temples that were used to construct the mosque, but there is no evidence to show whether those remains came from the actual demolition of an existing temple or it was brought from somewhere outside of the area itself. So a very interesting argument now raised by the ASI that we do not have any evidence to show where those idols or remains actually came from, and in any case, for more than 100 years, this complex has been frozen as a place where no worship has taken place, and therefore now at this late stage the Hindu side cannot raise a claim. In New Delhi, with cameraman Nasir, this is Anisha Mathur for India Today.